Yes. Good morning, Abhishek. Good morning, sir. Sir, I have one doubt. हाँ जी पूछो. Sir, concatenate function repeat करवा देना. हाँ जी. So for concatenate, first we need a array. So first we need to create a array. So let's say these are the elements. So these are the two arrays that we have. Clear? So first क्या है हमारे पास with this concatenate function array A हमने mention की हुई है. फिर हमने उसके बाद B mention की है. So B is concatenated here. फिर उसके बाद हमने A mention की है. So A is. तो जो भी ऑर्डर आप यहाँ पे मेंशन करोगे कंकैटिनेट मेथड में वैसे ही एलिमेंट्स कंकैटिनेट होके एक सिंगल एरे फॉर्मेट कर. क्लियर है? Yes, sir. Sir, once tell that why we write the import numpy as np. हाँ. Yes. Why we write this one? So yes, सुरखाब आप बताओ why we write import numpy as np? So yes, sir. Can you repeat once? My question is why we write import जो first step लिखते हैं import numpy as np वो किस लिए करते हैं? सर क्योंकि वो नम पैकेज में आता है और लाइक ऐसे फिर वो लिखना इम्पोर्टेंट है. लिखना important किस लिए है? Why the writing is important? सर क्योंकि फिर हमें उसे लाइक नमपाई में कन्वर्ट करना होता है ना तो इसलिए. नहीं इसलिए नहीं है because I told you yesterday also
because here we are using the array method, हमने array method use किया, concatenate method use किया, both the methods are part of this package, so that's why we write it. Clear? इस ये package necessary है, इसके बिना अगर आप इसको import नहीं करोगे so this will not work. मैं यहाँ पे np की जगह कुछ और लिख सकता हूँ, I can write here other than something other than numpy, np के अलावा कुछ और लिख सकता हूँ. सर नो, क्योंकि फिर हमारा यही चल रहा है, नम पैकेज ही चल रहा है. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पे abc लिख दिया आपने, अब जहां जहां पे आपने np लिखा हुआ है वहां पे आप abc लिख दो. सर ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे. हाँ कुछ भी लिख दो, वो तो कन्वेंशन है ये कि मोस्टली एवरीवन इज राइटिंग np. np स्टैंड्स फॉर, वो numpy के लिए एब्रीविएशन सी बनाई हुई है इसलिए. और अगर आप एज नहीं भी लिखना चाहते, यू कैन रिमूव दिस पार्ट आल्सो. उसके लिए आपको यहाँ पे फिर क्या लिखना पड़ेगा, numpy. सो दीज आर दी, देखो तब भी हमारे पास सेम आउटपुट आ रही, ठीक है. तो वो हमने लिखा है numpy एज np, तो आप numpy का भी यूज कर सकते हो, आप np का भी यूज कर सकते हो उसके साथ, ठीक है. अब एक प्रोग्राम लिखो सारे आप. राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन. Ask the user to input a number. Write a program in Python and ask the user to input a number, and then create an array, and then create an array from 0 to that number. ठीक है, इस array को प्रिंट करना है आप लोग. पहले एक नंबर इनपुट करवाना है यूजर से, और फिर बाद में उस नंबर तक हमने पॉपुलेट करनी है, एरे पॉपुलेट करनी है. सो ट्राई दिस प्रोग्राम. Yes, I request Shriya Mahajan, Harshvardhan, and Paul to switch on your cameras. हाँ यस, अविशी हो गया. Sir, I am not sure it is correct or not. ओके ओके, कोई बात नहीं, आप करो, ठीक है बेटा, ठीक है. जब भी तक इट्स ओके, यू कैन सेंड मी दी व्हाट्सएप आल्सो, एंड यस अविशी करवाएगी ये प्रोग्राम. हाँ जी बोलो बेटा, फर्स्ट स्टेप. So first I have written that import np numpy as np. ठीक है, ओके. नेक्स्ट. So then a is equal to np dot array is equal to 0 to 11. np dot Array. 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 That is 0 to 11. 0 to 11 कैसे लिखना? 0, 11.
Yes, sir. और इसको प्रिंट So करवा we लूं? will 0, 11, or we have to write a single each single word up to 10. आपको क्या पता कि यूजर ने 10 नंबर इनपुट करवाने हैं? हाउ यू आर श्योर दैट यूजर विल इनपुट 10 नंबर्स? और अगर हम ऐसे करते भी हैं 0 to 11, तो इससे अगर आप इफ यू ट्राई टू प्रिंट दिस वन, इससे 2 एलिमेंट ही हमारे प्रिंट हो गए हमारे। So ठीक then है? we will write the equal words like 0, 1, 2 up to 10 like. नहीं वो तो ठीक है, आपने चलो इसको कन्वर्ट कर लिया 0, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिख लिया आपने, ठीक है? Yes, ओके, sir. नाउ माय क्वेश्चन इज कि यूजर ने 15 नंबर इनपुट करवाने हैं, तो फिर क्या करोगे आप? फिर 15 तक लिखोगे? अगली बार यूजर ने 100 नंबर इनपुट करवाने हैं, तो आप 100 तक टाइपिंग करते रहोगे? No, sir. I have asked in the program that the first of all ask the user to input a number. ठीक है, वो नंबर डिसाइड करेगा कि मैंने अपने एरे के अंदर कितने नंबर रखे हैं। यू आर गेटिंग और नॉट? Yes, sir. तो सबसे पहले एक हमें नंबर इनपुट करवाना पड़ेगा। ओके, यस, नेक्स्ट श्रिया बताओ क्या चेंज करना पड़ेगा हमें इसमें? कुछ आइडिया है? यस श्रिया, वी हैव पुष्प। यस पुष्प, आप बताओ। सर हमें वो पार्ट रिमूव करना होगा और फिर लिखना होगा np range function. We have to use the range function. Okay, so let's say I will comment this one. So a is equal to np dot np range. range method, and let's say starting from अगर 0 से start करनी है, so 0 to अगर हमने n तक लेके जाना है, so I will write here n plus 1. Fine. So now let's say user wants to input 0 to let's say 15. So that's how you will get the 15 numbers. ठीक है? Next time user wants to input let's say 100 numbers. Clear? So you go here with the up to 100 also. Fine. So let's move to the topic. We have started with this NumPy. Clear? And then we have discussed the advantages, the difference with the list. Then we moved how to create the 1D array. Clear? We did a program for this. Then we did a few of the functions. इसमें से now whatever the function you find important, it's not basically mandatory to remember all the functions. Clear? So you will find gradually that like वैसे इसमें कोई ऐसा function नहीं है that is you find it very difficult. Empty, zero, clear, zeros and full method we have implemented everyone. Clear? So yes, Japit. So can you please tell the difference between np.empty function and np function? Empty and Random. random. So ultimately, no, both the method are basically used for random numbers. Clear? So that depends upon you that in this scenario you want to use which one. So you see here, create an array of 5 elements with random values, create an array filled with random values. So no, both the methods are doing the similar sort of function. Clear? Now we have used applied few operations here with the arrange method. Then we have basically yesterday focused on the how to copy the values, and we find the difference between with the copy method and the copy with when we make a copy like this. Clear? When we have assigned the array x to y. Clear? So if we make changes in x, they are reflected in y. But if we make a copy with the like this method, copy method, so the changes are not reflected in z.
Then we discussed on the another very important concept is array slices. So array slices is nothing but this is the replica of the slices that we did in arrays, or sorry, in list. Okay, so the slicing of array and list is nothing different, both are same. So if you take here, ठीक है, जैसे ये first example है, so this data is my array. So if I just mention a colon here, so all the elements will get selected. So this slice is basically the starting value and ending value. Clear? We have already implemented this one. Then here we have not mentioned the starting value. So when you don't mention the starting value, by default it is the this index value 0. Fine. And similarly, here we have not mentioned the ending value, so it will have the index of the last element. Fine. So the slicing concept is similar to the concept that we have did in list. Then we focused on the concatenate method. What is this method? Is concatenate, that is how to join multiple arrays. So the order that you will mention here in the concatenate method, in the same order the arrays will get concatenated, and you will get a single array with the values of different arrays. ठीक है, अभिषेक क्लियर अब ये मेथड concatenate method? Yes, sir. ठीक है, the best thing is that if you are implementing these things then the doubts will get removed. But if you are doing this just for theoretical purpose and we don't implement anything, so then gradually the confusion will increase. Clear? So my request to all the students is that please implement, maybe it is small program or a bigger one. So this program we have skipped. This one is now next is, that is how to apply the different arithmetic operations on one dimension. So the arithmetic operations that we have is plus, minus, multiplication, division, and we can add a scalar value to all the elements of the array. Now let's see how this is done. So we create a first array. So these 4 elements are there. Then we have another array B. Clear? So 2 arrays that we have. Next is, first is the arithmetic operation is addition. So let's say C is equal to A plus B, and I print here the resultant array, that is C. Clear? So you see here the corresponding elements. 1 is added to 4, 2 is added to 3, and now this corresponding addition is taking place, and you get here the resultant array C. Clear? Where the addition of elements of corresponding elements of A and B are added. Fine. If we similarly, you can go with the this subtraction operation. Fine. The basically A minus B. So 1 minus 4, you get minus 3. 2 minus 3, you get minus 1. 3 minus 2, you get 1. 4 minus 1, you get 3. Similarly, you can try it out with the multiplication also. So the corresponding elements get multiplied here. 4 into 1, 4, 2 into 3, 6, 6, and 4 values. Now we move with the division operation. Clear? So 1 divided by 4, you get this value. 2 divided by 3, you get this value. 3 divided by 2, you get 1.5.
4 divided by 1, you get 4. So by default, the data type is basically converted into the float one. Clear? And you can, if you need that, you can convert into the integer one also. Then the last one is basically to add basically a scalar value. जैसे मैं a के अंदर क्या है, सभी एलिमेंट के साथ मैं 3 ऐड करना चाहता हूँ. I want to add all the elements 3 here. ठीक है? तो क्या होगा? This is 1 plus 3, 4, 2 plus 3, 5, like this. So you run this one. So you see here 4, 5, 6, 7. So this is how this is done. 1 plus 3, 4, 2 plus 3, 5, 3 plus 3, 6, then 4 plus 3 is 7. So this is how I have added a scalar value to all the elements of the array A. Yes, Avish. Sir, how to convert the float value into integer? Please explain once. Float value to integer one, like let's say we did it in the earlier part, a divided by b that we have did. Yes. Now I want the result in not in the like in the decimal form. So you can write here np dot data type is equal to np dot int. Data type invalid. So we can't do this in I think here. Print का ये part नहीं है ये. Like this we did earlier also, how to convert the fractional into the integer ones. अभी इसका सिंटैक्स देखना पड़ेगा एक बार क्या है. होता तो ये ऐसे ही है, that is the data type we need to convert into integer one, but basically एक इसकी एग्जांपल की थी पहले. ठीक है, कोई बात नहीं, इसको करेंगे हम. हाउ टू कन्वर्ट दिस? वी कैन कन्वर्ट द रिजल्ट इनटू integer part, that I will tell you the exact syntax. I don't know from where I have used this one. There ये लास्ट जब हमने एरे की वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया था इनटू द रिजल्टेंट टू दिस वन. I think here we have did it here somewhere. Yes, basically ये हमने किया था zeros जहां पे हमने यूज किया, like here where when we have created the array. तो ये हम मेथड के साथ हम कन्वर्ट कर सकते हैं. where how to convert this one, like here we have, जब हम zeros के साथ हमने array create की थी. ठीक है, like I create here a array. And zeros and how many values that we want to keep here. Let's say I think 5 values good. ठीक है,
It's very difficult to remember all the functions at one. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, ये फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है हमारे पास, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लेता है ये फ्लोट टाइप वैल्यू लेता है इसके केस. सो here we can convert into the integer one by writing here, that is data type is equal to np dot integer. So this is how to basically convert the fractional values into this one. Clear? And then we will see how to basically convert the result in our case to the integer one. So let's go back to the program that we were doing. Yes, this one. Clear? So what we have did here, we have basically applied the arithmetic operation on two arrays, added the two arrays, then we subtracted both the ones, applied the multiplication operation, then we did the division operation. Clear? And last, what we have did, we have added a scalar value to the array. Now you can see here on the right hand side, we have few of the aggregate functions also. What are the aggregate functions are there basically? That aggregate functions are those functions which works on multiple values and give a single result. Let's say we take an example here, and first we create an array. Clear? So let's say these 6 elements are there, and then I want to sum all these elements. So for that, that is A is my array, then I apply the sum method on this one. Clear? So this will sum up all the values of my array. Clear? So what is this is called? This is called the sum is a aggregate function. और एक एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है? एग्रीगेट फंक्शन इट वर्क्स ऑन द मल्टीपल वैल्यूज एंड इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू. तो इसने ये मल्टीपल वैल्यूज को सम कर दिया, ऑल दीज वैल्यूज, एंड रिटर्न्ड अ सिंगल वैल्यू टू अस. फाइन. Similarly, we have other aggregate functions like we have minimum. So this will find the minimum among these all. Then we have maximum. So like this, we have few aggregate functions that we can apply on the arrays. And basically what is the working here is that it works on the multiple values and it returns a single value insert. So that's all we have basically with one-dimensional array. The next is a very important topic, that is how to basically deal with the two-dimensional array. So I think that's more challenging that we have, because one-dimensional array is just equivalent to the list. But how we deal with this one? This two-dimensional array basically consists of, you can see here in this figure, it consists of rows and columns. This is just equivalent to that you have a Excel. Clear? So in Excel, what we have, these are the columns you have, and on this horizontal side you have the rows. Now, what is the definition here is that an array of one-dimensional index subscript is known as one-dimensional array. And in the above, you can see here that we have created here a num array. This is the num array, name of the array. And the first 3 represents the rows. This 3 represents, you can see here how many rows are there, 1, 2, and 3. And the second parameter here is 4. It represents that this object has how many columns it has. So you can see 1, 2, 3, 4. And the another important thing is there that this 0 is the index value of first row, 1 is the index value of second row, and 2 is the index value of the third. Then another important thing is there that with regard to the columns, the index value of first column is 0,
the index value of second is 1, this is 2, this is 3, and so on. This will keep on increasing as many number of columns we have. Now the question is how to access a particular element here. ठीक है, जैसे हमारे पास वन डिमेंशन एरे थी, here you can see here that this was the one dimension array. तो वन डिमेंशन एरे में हमें क्लियर था कि अगर मैंने कोई 7 को एक्सेस करना है तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 2, क्लियर. बट व्हेन वी हैव टू एक्सेस द थिंग्स इन टू डिमेंशन एरे, दिस, अगर मैंने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है. आई हैव टू जस्ट फर्स्ट लुक एट द रो, दिस इज 0th रो, फर्स्ट रो एंड दिस सेकंड. तो इसकी रो की वैल्यू क्या आ गई 2, और उसकी कॉलम वैल्यू दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. तो इसकी जो इस एलिमेंट की जो पोजीशन है दैट इज 2,3. 2 represents the row and 3 represents the column. Similar, the first element is, if you talk about the first element, so its position is, its row index value is 0 and its column index value is also 0. So like this way we access the elements of two-dimensional array with first parameter represents the rows and the second parameter, basically here the second value represents the column value. So this you need to track, and this is very vital concept, and two-dimensional is, now you will find it more interesting how to basically deal with the two-dimensional. Fine. So first you need to basically understand the structure of the two-dimensional array, then you can work with the two-dimensional different operations of the two-dimensional array. इसमें किसी को कोई डाउट है, you ask if you have any doubt in the like how we have two-dimensional array. जैसे हम टेबल बनाते हैं, टेबल, तो टेबल इज द एग्जांपल ऑफ दिस. यस बेटा, कैमरा ऑन कर लो युवराज. सर मेरी स्क्रीन ही ब्लैक होगी, पता नहीं क्यों. हाँ सर स्क्रीन ही ब्लैक होगी पूरी. अच्छा, और माइक्रोफोन और कैमरा. चलो ठीक है, पूछो क्वेश्चन क्या है आपका. सर मैं लीव करके ज्वाइन करूं? हाँ जी, सर स्क्रीन ब्लैक होगी या लीव करके ज्वाइन करूं? हाँ जी कर लो. यस, any question on this two dimensional? yes, Arjot Singh, clear है ये? तो बताओ भाई. So this is the first program on 2D array, how to create a two-dimensional array. So two-dimensional array can be created using array method. So इसके लिए method हमने वही use करना है, array method with list object with two-dimensional elements. तो इसके अंदर क्या हमने basically क्या करना है, basically we have to make use of the two list. You can see this is the first list, this is the second list, and both the list should be inside the another square bracket. ठीक है, तो both the list should be inside the another. जैसे हम मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं, मैथ्स में हम इसको मैट्रिक्स बोलते हैं. कभी सुना है नाम ये मैट्रिक्स का? 10th में सुना होगा कई स्टूडेंट ने. यस सर. ठीक है जी. सो इन 10th we sometimes we make use of this one. जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, दिस एग्जांपल इज देयर. अब ये जो एरे क्रिएट की है, ये किस तरह की एरे है, लाइक आई विल टेल यू दैट हाउ दिस एरे इज बेसिकली फॉर्मुलेटेड. तो जो इसकी जो फर्स्ट रो है, क्लियर, दिस एरे विल क्रिएट इट 2 रो मैट्रिक्स. तो इसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट वी हैव 3 to 1 and 1 to 3. तो जो फर्स्ट रो है हमारे पास वो बन जाएगी हमारे पास 3, 2 and 1, और सेकंड रो हमारे पास बन जाएगी 1, 2 and 3. So in two-dimensional array that you need to focus on first is how we are creating the two-dimensional array. तो इसके अंदर you see here हर एक रो के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट है. This is for first row, a square bracket, और इसके बाद भी एक ये ब्रैकेट आएगी. क्लियर, स्क्वायर ब्रैकेट एक और है इसके बाद, that you can say is represented for a matrix. यस सर.
And now the elements, position of the elements here. जैसे ये एलिमेंट है हमारे पास, तो इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास, दैट इज इट्स पोजीशन इज 0 0 column and 0 row. Clear? How we say that? We say that first row its index is 0, the second row its index is 1. Similarly, this row is index value is 0, this is 1, this is for this row. And if I have to find the position of this element, so that is basically, you can see here, this is the 0th row and first column, 0 comma, you can say 1. Similarly, this element is, this is its position is 0 and row wise and column wise this is 2. Similarly, if we move to this element, its column value is 1. No, sorry, this its row value is 1 basically. Row value is 1 and column value is 0. Next element is this 2, clear? And its row value is 1, column value also 1. Here is 3 and its position is, row is 1 and column position is 2. Fine. So it's very, very important that you basically understand the concept of 2D array. So 2D array basically consists of rows and columns. Clear? If you are basically understand the basic concept, then you can apply the different operations here. So in this example, you can see here the next step is basically, first we have created a array, then you have see the type of the array, then is shape, first element is printed and first element is updated. So not a difficult one we have. First, if you understand this one, so we can easily write a code for this one also. So first, how to create a matrix, np dot array. The method is same, array method we have. Now first we have to create a first row, 3 2 1, and then separate the first row with comma. Then the second row is 1 2 and 3. Clear? Then just print this one. Clear? So this is basically a matrix with 2 rows. ठीक है? अगर मेरे को इसके अंदर I have to keep here 3 rows. So you see here the third row is added. Fine. अब बाद में जो इसके अंदर जो मेथड हमने यूज किए हैं, दैट इज वी वांट टू प्रिंट द टाइप ऑफ ए. So you see here the type of a, that this is a numpy object. Clear? Similarly, you want to find the shape, a dot shape. So its shape is 3 by 3. It has 3 rows and it has 3 columns. So this is about the shape parameter of the array. Fine. And if we have to print a particular element, first element is, that's the first element I want to print, A01, A00. First element is A00. That is this 3 is. Second element is A01. Which element is this? 2. Clear? And then is A02 is basically the third element is 1. Fine. And if you want to change a particular element, जैसे मैं first element को change करना चाहता हूँ, A00, I want to keep it 5, let's say. Clear? So now you see here the first element is converted from 3 to 5. Updated value here is 5. So this is how we basically deal with the basic operations of the 2D array. Please implement these one. If you have any sort of doubt, it can be only removed if you basically exercise and if you will do some homework on yourself.
यस कोई क्वेश्चन है बेटा आप लोगों को? सर यस हाँ जी पूछो। सर स्कूल्स कब स्टार्ट होंगे? वेरी सून। नहीं सर 20 डेट को कह रहे थे गवर्नमेंट, वो सच में होंगे सर? ये गवर्नमेंट बताएगी। सर Yes. Anyone else has any question? What is in the domain of our class? Ask those question. Yes, Japit. Sir, in the advantages of NumPy, there was a point Boolean selection. Can you please explain that? No, don't worry. Please, step by step, we'll move to that process. Na? Okay, sir. So Boolean values are just, we have in Boolean we have true and false values. Clear? So you will find the arrays with the index value are such that you can access the elements from their Boolean values. Yes. Any other questions, Surkhab? सर जैसे हमने इसमें वैल्यू चेंज की थी as 5, तो सर ये इम्पोर्टेंट है कि हमें लाइक वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी या फिर ये हमारी मर्जी है? वो तो डिपेंड करेगा ना, आप ऐसा तो कुछ नहीं है हमें कि ये नेसेसरी है या क्या है। दैट इज अगर आपको कहीं पे भी किसी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट की वैल्यू आपको चेंज करनी है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाउ टू अपडेट द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि नंबर 1 पॉइंट है कि हमने उस एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है। उस एलिमेंट को हमने एक्सेस करना है उसकी पोजीशन से। ठीक है, जैसे लेट्स से मैंने ये 6 की वैल्यू को 10 करना है, तो यस कौन बताएगा ये 6 को मैंने 10 करना है, कैसे करूंगा? सर लाइक हम उस वैल्यू लिख देंगे वहां पे। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यस जब इट फर्स्ट टेल यस हाउ विल डू दिस? So here we'll write a in brackets 2 and again in brackets 2. Yes. So basically, the position value of 6 is basically the first we have a 0th row, then first row, then this is the about the next row, second row. So this is second row, and column position is this is 0 column position, then 1 column position, then 2 column position. So its position is 2 by 2, and if I want to keep it as 10, so just place here 10. So just run this one. Now you see here this 6 is replaced with 10. So how to access the elements of the matrix? Because वो पहले तो हमें लिस्ट के केस में तो क्लियर था कि हमने उसकी इंडेक्स वैल्यू डाली। अब हमें थोड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज हमने उसकी रो पोजीशन भी देखनी है और उसकी कॉलम पोजीशन भी देखनी है। सो द चैलेंज इज मोर विद रिगार्ड टू द 2 dimension। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी अदर क्वेश्चन? प्लीज, सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट इज प्लीज इंप्लीमेंट दिस वन। क्लियर? थोड़ा टाइम निकालो और 10-15 मिनट ये एक्सरसाइज कर लो, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। अगर आपको लगता है कि मेरे को प्रोग्राम नहीं समझ आ रहा, यहाँ से कॉपी कर लो इसको, कॉपी दिस प्रोग्राम एंड पेस्ट ऑन योर इंटरफेस, और आप हर एक लाइन को अलग अलग से करके देखो कि टाइप का क्या फंक्शन है, शेप का क्या काम है, स्प्रिंट का क्या काम है। तो आप एक एक लाइन एग्जीक्यूट करोगे तो देन यू विल बी हैविंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट इफ यू विल रन द कोड एट वन गो तो उसमें थोड़ा सा आपको चैलेंज है कि हर स्टेटमेंट का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। सो यू हैव मल्टीपल वेज टू बेसिकली इंप्लीमेंट दिस वन। Clear? Because now we are moving to the more and more difficult topics. ठीक है, अभी नेक्स्ट हमने 2D के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस करने हैं, हाउ टू गो विद द ऐड ऑपरेशंस, सबट्रैक्ट ऑपरेशन एंड सो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक्स बेटा।